Assalamu alaikum everyone. This is your host Bilal Wasti and welcome to another episode of Idea Podcast Season 2. Today we have with us Saher Arshad. She is an alumna of COMSATS University Islamabad. She is a network and digital device analyst, digital content creator and social media expert. And she is also the founder of the Motherhood Forum, जिसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे. तो thank you so much for joining us, ma'am. कैसी हैं आप? Walaikum assalam, Bilal. No, thank you for having me, and I am good. How are you today? I'm good. It's a pleasure. तो हम ये जो आपकी जर्नी थी जो भी मैंने इतनी सारी बातें की हैं कि आप डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं डिजिटल डिवाइस एनालिस्ट भी हैं एंड यू आर आल्सो रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मदरहुड फॉरम. इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हाउ वाज योर अर्ली एजुकेशन, मतलब आपका चाइल्डहुड कैसा था? Right. So, Bilal, I was born and raised in Islamabad. यहीं से मेरी schooling है. Then ऑलराइट. I went to college in Islamabad, and then I joined engineering out of my own passion. ऑलराइट. I am the eldest among my siblings, and I was always given full authority by my parents कि बेटा जो करना है, जैसे करना है, जो बेहतर लगता है, टीचर्स से डिस्कस करो, फ्रेंड्स से डिस्कस करो, फिर अपने लिए जो करियर या जो पाथ में बेहतर लगता है वो चूज करो. So I chose to become an electrical engineer with specialization in telecom. I completed my degree from COMSATS and सो then started. आपकी स्कूलिंग कहाँ से थी? It's from IMCG, Islamabad Model College for Girls. It's ऑलराइट in ऑलराइट. फिर F704. फिर उसके बाद यू वेंट टू कॉलेज वेयर? Yeah, it was FGCW F72. ऑलराइट ऑलराइट. तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का बनने का मतलब काफ़ी कम होता है लड़कियों में कि यू आर गोना बी एन इंजीनियर. तो ये किससे मोटिवेशन आपने हासिल की और कौन था इसके पीछे? Just my friends and teachers, actually. It's also a really funny story. When I was in my second year of college, उस वक्त जब हम्म. एडमिशन्स का वक्त आया कि एफएससी ख़त्म होगी और उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री शुरू करनी है, सो वी वर हम्म. ऑल अप्लाइंग टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. So there was this prospectus from NUST, जिसमें there was a degree called mechatronics engineering. और हम्म. उस प्रोस्पेक्टस में जो उसका टाइटल पेज था ना उस प्रोग्राम का, बड़ा इंटरेस्टिंग सा था. उस पे रोबोट्स बने हुए थे, तो देख के हम्म. ना बहुत अच्छा लगा. अच्छा, लाइक आई सेड, लाइक देयर आर नो इंजीनियर्स इन माय सराउंडिंग्स और माय पेरेंट्स आर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स. तो ओके. दे हैड नो आइडिया कि क्या बेहतर है, क्या चूज करना चाहिए. लाइक आई सेड, दे हम्म. टोटली लेफ्ट इट ऑन टू मी. अच्छा, जब मैंने वो प्रोस्पेक्टस देखा, आई गॉट रियली एक्साइटेड टू सी कि अच्छा इस डिग्री में रोबोट्स का काम करना होगा. सो आई चोज मेकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड आई थॉट कि बस मुझे यही करना है. हम्म. Fast forward a few months, I started my mechatronics engineering degree from NUST. And ओके ओके. तो कॉमसेट्स आपके दिमाग में पहले से थी या वैसे ही आपने मतलब नहीं अब नहीं, यही yeah, मौका it मिल रहा है was, तो? no no, it was on the cards already. ओके ओके ओके. उसी वक्त रिसेंटली वो जो रैंकिंग आती है ना उसमें जरा टॉप पे आ हम्म. रहा था, तो नया नया जरा हम्म. था कि अच्छा ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, जाना चाहिए. सो या. तो पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर सी बात है यू स्विच्ड, ठीक है, फ्रॉम मैकेट्रॉनिक्स टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है. तो और आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं इफ आई एम नॉट या, रॉन्ग. सो बस मिल गया था हाउ वाज दैट? किसी जमाने में. अब ये बात तो नहीं कह सकते ना कि दो गोल्ड मेडल्स आपने लिए थे, ठीक है. तो अल्हम्दुलिल्लाह, या. इट वाज लाइक आपकी मेहनत थी तो आपको मिला, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है. तो सो हाउ वाज लाइफ इन कॉमसेट्स? Yeah, so बहुत पुरानी बात लगती है, like it was more than a decade ago. But yes, हम्म. it was a good experience. I came here. जो 6 महीने नस्ट में गुजारे थे उसके मुकाबले में, तो it was entirely different military setup. I was in EME, so it was a military हम्म. setup. वहाँ से यहाँ आके सब कुछ बिल्कुल different था. उस तरह की कोई रैगिंग भी नहीं हुई. दोबारा से फर्स्ट सेमेस्टर हाँ. में आके थोड़ा लीनियंट हम्म. था, ज़्यादा फन था. प्लस yes, it was all good. We used to be in the H8 campus back then. ये हम्म. जो नया हमारा कैंपस है, ये तो अभी सेटअप भी नहीं हुआ था. हाँ हाँ. It was still under ओके ओके. construction. Yeah, so that's where we हम्म. joined. It was a smaller campus, more cozier. अच्छा था, अच्छा वक्त गुजरा वहाँ पे. Then after the second semester, we moved to the new campus. ओके ओके. When we did move to the new campus, वहाँ हम्म. पे अभी दीवारों पे पेंट भी नहीं हुआ हुआ था. जगह जगह पे
लकड़ी के पिलर्स वो जो सपोर्ट करने के लिए लगाते हैं ना किसी नई बिल्डिंग में, कहीं से सरिये जी जी, निकल रहे हैं अंडर और कंस्ट्रक्शन था काइंड ऑफ अभी। अंडर कंस्ट्रक्शन था, सिर्फ हाँ डबल ई हाँ। की बिल्डिंग थी जो कुछ हद तक कंप्लीटेड थी और बाकी कोई बिल्डिंग अभी नहीं बनी थी। तो यू ऑलराइट। कैन से दैट हमने अपनी आंखों के सामने पूरे कैंपस को बनते ग्रो करते देखा है इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। सो या इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। यहाँ आके कैंपस के साथ हमने भी ग्रो किया, चीज़ें लर्न की, अपने सामने सब कुछ बनता देखा, अपने आप को इंजीनियर बनते देखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी दैट वी have today उस वक्त नहीं थी, बन रही थी। So yes, it was a good experience. It was a good, full of life 4 years that I हाँ, spent with the university. सही सही। तो व्हेन डिड यू जॉइन आइडिया? तो आइडिया में कब आई थी और क्या एक्सपीरियंस था आपका उसमें? Right. So instead of asking when did I join IDEA, it would be better if you say when did you guys think of creating idea, क्योंकि क्रिएटिंग दिस उससे सोसाइटी, यस। उससे पहले नहीं था। I was in my that was 2010, that was the end of 2010 and I was in my eighth semester, or yeah, it started when I was in my seventh actually. So COMSATS decided to, the electrical engineering department decided to hold its first projects exhibition where we were going to invite universities from all over the country to come and exhibit their projects. And then to take it to the next step, we invited professionals from various fields, various industries to come and look at the projects and, decide the winners and so on and so forth. So I was in the organizing committee of CPEX. It was like यस, COMSAT's engineering projects exhibition. I'm not sure if it still happens or not. इट So स्टिल that हैपेंस, यस। right, wonderful, good to know. So it started with CPEX. अच्छा, जब CPEX शुरू किया और invitations, अच्छा शुरू राउंड ऑफ इनविटेशंस, हमने इंडस्ट्रीज को इनविटेशंस भेजने हैं, फिर हमने यूनिवर्सिटीज को इनविटेशंस भेजने हैं। तो मेरा रोल तो वहाँ से स्टार्ट हुआ कि सिंस आई वाज ऑलवेज इनटू राइटिंग, तो क्या ऑलराइट। कंटेंट होना चाहिए, हम एक इनवाइट बना रहे हैं तो उसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। मतलब टीचर्स ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे, me and my group of friends, we were involved with doing this। तो वहाँ से शुरू हुआ कि अच्छा अब आपने इनविटेशंस बनाने हैं, फिर उसके बाद होते 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 किस दिन कौन सी एक्टिविटी रखनी है, किस किस को इनवाइट करना है, उसके बाद इवेंट होस्ट करने के लिए जो स्पीच लिखनी है कि जो स्टेज पे जाएगा, जो सबको वन बाय वन इनवाइट करेगा, ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, वो सही क्या सही बोलेगा, सही। कैसे बोलेगा, उसकी ट्रेनिंग कैसे करवानी है, प्रैक्टिस कैसे करवानी है, ये सारे स्टेजेस। सर्टिफिकेट्स प्रिंट करने हैं, उन पे क्या लिखा होना चाहिए, उनका क्या डिज़ाइन होना चाहिए, शील्ड्स बनानी है, कहाँ से बनवानी है, क्या डिज़ाइन होना है, मतलब इस तरह ये सब कुछ शुरू हुआ। अच्छा, ड्यूरिंग ऑल दैट प्रोसेस some of us started thinking कि जब हम इतना कुछ करवा रहे हैं, so why not add some other activities to it, कि कोई डिबेट कंपटीशन करवा लेते हैं साथ ही हम, मतलब जस्ट फॉर आवर ओन स्टूडेंट्स, उनकी एंगेजमेंट के लिए, कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तो बिजी है प्रोजेक्ट एग्जीबिशन के काम में, तो बाकी पूरी यूनिवर्सिटी क्या करेगी। सो वी like another group along with us started working on these things कि अच्छा एक डिबेट कंपटीशन भी करवा लेते हैं, एक इंडस्ट्रियल लिaison ऑफिस भी बना लेते हैं कि हम जिनको बुला रहे हैं उनको हम फर्दर उनकी हेल्प कैसे यूटिलाइज करेंगे स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट में। फिर सम पीपल केम अप विद द आइडिया ऑफ मुशायरा भी करवा लेते हैं, कॉन्सर्ट भी करवा लेते हैं, सही। टैबलोज भी करवा लेते हैं, उसके बाद प्रोग्रामिंग कंपटीशन भी करवा लेते हैं। सो दिस इज वेयर इट स्टार्टेड एंड दैट वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ आइडिया कि ऑलराइट। इस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए जिनमें स्टूडेंट की एंगेजमेंट हो। एंड इट वाज सो गुड टू सी सच ओवरवेलमिंग रिस्पांस फ्रॉम एवरीबडी हु केम अप टू वॉलंटियर फॉर दिस, because this wasn't related to their degree, to their degrees or grades or studies, but so many people came forward to work for it, and eventually like we had a team of maybe up to 100 people जो लोग इस पूरे joint venture पे idea plus CPEX पे काम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह it was a huge success। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ लर्न किया, बहुत एंजॉय किया उसमें। बट येस, दिस इज वेयर आइडिया केम इनटू बीइंग, लाइक आइडिया स्प्रैंग अप फ्रॉम सीपेक्स एंड लेटर ऑन, बस फिर उसके बाद तो आइडिया ग्रो करता गया और आज इस पॉइंट पे है। अल्हम्दुलिल्लाह, द अमेजिंग वर्क यू गाइस आर डूइंग, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। थैंक यू थैंक यू। तो जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट्स को वाकई को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि लाइफ जो है
इट्स डिफरेंट प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी हेल्प करती हैं ये चीज़ें, जैसे ऑर्गेनाइजिंग आपने कहा कि यू यू डिड सम ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टफ। अभी भी जाहिर सी बात है, वही एक बेस स्टेज होती है जो आपको ग्रो करवाती है आगे। अभी भी आपको याद आती होंगी वो चीज़ें काइंड ऑफ। सो बिल्कुल, दैट्स ट्रू। या तो आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, तो फिर आपके हाउ वाज योर प्रोफेशनल लाइफ देन? Right. So right out of my degree, I got inducted in Telenor as an IP network operations officer. हम्म। Now that's another ओके। interesting story. When I appeared for the interview, I still had to get done with my project's viva. तो बस अप्लाई कर ऑलराइट। दिया, पोजीशन नज़र आई हम्म। ऑनलाइन पोर्टल पे, और उस वक्त के जस्ट लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 2011, हम्म। spring 2011. तो उस वक्त recently Telenor has won this best place to work at award by somebody. So among all हम्म। of us telecom engineers, it looked like it's the ultimate place to work at. So everybody was applying. I also applied for a position I saw online on their portal, and felt very lucky when I got a call for the interview. Bahar alhamdulillah, for later after two interviews, two rounds of interviews. Acha, during the interview, they told me that this is an operations position. Acha, now when you're in the industry, you don't know about the like क्या किस किस तरह की पोजीशंस होती हैं, क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, नहीं पता होता हम्म। आपको। बस होता है अच्छा आपने आपको जॉब आपने सिक्योर करनी है ना। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स होती हैं, परमानेंट जॉब्स होती हैं, हम्म। फिक्स टर्म जॉब्स होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इन सब चीज़ों का तो आइडिया ही नहीं था। Acha, when I went for the interview, for the second interview, I was told that this is the position in the operations department. It's network operations. तो क्या आप हम्म। खंबे पे चढ़ जाएंगी? अब उस वक्त आप नए नए मोटिवेटेड होते हैं, फ्रेश इंजीनियर होते हैं, आप तो कहते हैं मैं तो हाँ। दुनिया पता कर लूंगा। So I was like, yes, of course, if my job demands this, why not? They're like, आप लड़की हैं, आप ऑलराइट। देख लें. And I was like, no, no, I'm up for it. I can do it. Acha, then they हम्म। said that this involves the whole north region. So it covers Jehlam, it covers Abbottabad, and all the हम्म। other cities in this area. So will you be able to travel? And I was like, yes, why not? जब करना पड़ेगा तो कर लेंगे, अगर बाकी लोग करते हैं टीम के लोग तो मैं भी कर लूंगी, कोई लाइक आई डोंट थिंक इट विल बी एन इशू। हम्म। अच्छा, अगर रात को एक्टिविटी के लिए आना होगा, सिंस व्हेन एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड ऑन द नेटवर्क, लाइक the IP and the voice and data network is always live. You cannot have any हम्म। downtime on the network because it means कि हम्म। network नहीं चलेगा ना, बात नहीं हो सकेगी, data नहीं चलेगा, so ऑब्वियस। you can't यस afford यस it. यस। So all the हम्म। network activities are performed at night only. So you take a ऑलराइट। window in which you get हम्म। an outage when outage approved कि अगर in case services go down, so this is what the impact will be. It gets approved by the higher management and only then you go ahead with the activity. So the activity window हम्म। होती है ना, it starts at midnight and it ends at 6 a.m. So you try हम्म। and hurry and get it done as soon as possible, but that's the window. So they were like activities तो रात को होती हैं तो आप आ जाया करेंगी। अच्छा, और आना भी ऑफिस लोकेशन पे तो नहीं होता है, एमएससी पे जाना होता है जहाँ सारा इक्विपमेंट लगा होता है। तो आप हम्म। आ जाएंगी? एंड आई वाज लाइक यस। अच्छा, थोड़ा थोड़ा मुझे था कि मैं हर बात में यस बोलती जा रही हूँ, बट क्या मैं सही कर रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ? बट देन लाइक आई सेड, आई वाज अ मोटिवेटेड फ्रेश ग्रेजुएट, सो आई अग्रीड टू ऑल द टर्म्स कि ठीक है हम्म। मैं आ जाऊंगी, मैं कर लूंगी। एट द एंड दे टोल्ड मी that we have never hired a girl in network operations before. So if you get hired, you will be हम्म। the first girl in the history of Telenor operations. And I was like, yeah, let's do it, man. Acha, alhamdulillah, I got hired for the position, and हम्म। शुरू में like miscellaneous tasks, छोटा मोटा काम. अब हर थोड़े हम्म। दिन बाद I used to ask my line manager, सर एक्टिविटी कब करवाएंगे, मुझे साइट पे कब भेजेंगे, एमएससी कब हम्म। भेजेंगे, आप लोग खुद नाइट एक्टिविटीज कर लेते हैं, मुझे अभी तक क्यों नहीं बुला रहे? लाइक 3 to 4 months into it, and my I हम्म। still remember my line manager. He said to me कि like he's a very kind person. I look हम्म। up to him, and he said कि जब तक हम यहाँ हैं आपको आने की हम्म। जरूरत नहीं है, हम दिन के काम आप दिन के काम संभाल लें, हम रात के काम संभाल लेंगे. Like that was really सही kind of सही him. सही। But I still used to feel that if we are getting paid equally, then we should work हम्म। equally too. So later on, when it was required, I did do night activities. I did go to MSCs at night. I did go to my office to work at night. घर से बहुत काम करना पड़ता था क्योंकि network operations में you stay on call. So there is a whole या department. या। It's called NOC, हम्म।
नेटवर्क ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग सेंटर, तो वहाँ पे ऑलराइट। वो डे एंड नाइट वो 24 आवर्स काम कर रहा होता है एंड पूरे उनके स्क्रीन पे हम्म अलर्ट्स चल रहे होते हैं. सो कोई एक छोटी सी चीज़ भी डाउन होती है, कहीं पे कोई एक लिंक डाउन हुआ है, वो आपको ऑपरेशंस की टीम को इन्फॉर्म करते हैं. हम्म एंड यू बीइंग ऑन द रोस्टर दैट डे, अगर आपकी बारी है टीम की, वन बाय वन इट्स ऑन रोटेशन, तो इफ इट्स योर टर्न एंड यू गेट द कॉल, यू हैव टू गेट थिंग्स डन. तो ये तमाम काम किए, आज पूरी पूरी रात जाग के एक्टिविटीज़ की. हाँ, खंबे पे नहीं चढ़ना पड़ा क्योंकि इस काम के लिए आपने टेक्नीशियंस रखे होते हैं. आई लेटर हम्म। गॉट टू नो कि वो इंटरव्यू में सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे या मे बी चेक कर रहे थे इफ दिस पर्सन ब्रेक्स अंडर नर्व्स और नॉट. सही सही So सही। yeah, that was it. It was a challenging experience. It was a wonderful learning experience. I grew a lot in that position. I worked in the operations position for like 4 or 5 years हम्म before moving to the next role. Plus, Alhamdulillah, I feel very lucky that I was able to perform my job role well while being married and a mother of a child. हम्म। But later on, माशाल्लाह। when like हम्म आपको नॉक की कॉल्स भी रात को जगा रही हैं, फिर आपको रोता हुआ बच्चा भी रात को जगा रहा है, तो फिर देन दे केम अ पॉइंट व्हेन इट got too much and I decided to move on from operations to another role so that I can सही balance सही। my work and my home responsibilities. वर्क लाइफ बैलेंस, यस। तो Yeah. तो फिर उसके बाद आपने अपनी कोई डिफरेंट फील्ड चूज की थी या उसी फील्ड में It ही कुछ was आपने? yes, it was it was a new team. It was a sub team created under the network operations team I was working in, हम्म। but it did not involve 24/7 availability. ऑलराइट, सही सही। तो लाइक यू सेड के वर्क लाइफ बैलेंस भी आपका थोड़ा सा खराब हो जाता है बिकॉज यू आर डूइंग सो मच राइट नाउ कि आप उधर भी जा रही हैं, नाइट शिफ्ट भी हैं, डे शिफ्ट भी हैं, रात को भी जागना पड़ना है, एंड यू सेड दैट यू आर अ मदर ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो हाउ डिड द आइडिया केम ऑफ द मदरहुड फॉरम? Right. मतलब Okay. So या when I was a first time mom, like I said, I was living in a nuclear setup. There was no other family हम्म। around. My own parents live nearby. Um, राइट। but again, सुबह आप जा रहे हैं बच्चा पैकअप करके पूरे दिन के लिए, और खुद आप ऑफिस में और वो कहीं और पे हम्म है, and then you come back at night and then you pick up the kid and then you go home. So even if you have parents around, they support you during the day, but when you take the baby home from then onwards, it's your responsibility and there is nobody हम्म around who has the experience to guide you. So हम्म you learn everything on your own. That's when I realized that there is no local support available for हम्म moms like me who are not living with families, who don't have anybody to tell them what to do, when to do, how to do. So हम्म when I was expecting my second child, that's when हम्म I decided to create a platform online for mothers of Pakistan where they can share their experiences and help each other. Uh, एक और चीज़ इसमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे इर्द गिर्द अगर जो सपोर्ट अवेलेबल भी है ना, it's not हम्म। authentic or up to date. Like even the things our ऑलराइट। mothers or mothers-in-law tell us, those are old wives' tales. हम्म Some of them, or in some situations, most of them, go against what science says. So the point of creating the Motherhood Forum as a Facebook group was also to debunk all those myths and to guide people towards aware and safe parenting practices, ताकि हम्म हमसे वो हम्म गलतियां ना हो जाएं जो कि हो चुकी हैं या जिनकी वजह से हमें लेटर ऑन कोई नुकसान उठाना पड़े. तो हम्म ये सोल मकसद था. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि वॉलंटियरिंग का जो जज्बा आइडिया या सीपेक्स में काम करते हुए सीखा या एक्सपीरियंस किया, वो ही हम्म जज्बा था जिसकी वजह से लाइक which led me to do something for mothers. Like I had no personal motive behind doing this except for हम्म learning and sharing. कि हम्म अगर मेरे पास कोई ऐसी नॉलेज, कोई इन्फॉर्मेशन है जो मैं दूसरों तक पहुंचा सकूं या किसी और के पास है जो वो मुझ तक पहुंचा सकें, so why not? So one thing that I had in mind when I started the Motherhood Forum was to ensure that everything which is shared at my platform is what is recommended by the World Health Organization and the या American Academy of Pediatricians, ताकि कोई भी ऐसी हम्म चीज़, कोई भी ऐसी बात ना हो which goes against it, because it's a huge responsibility guiding people. If there is something that they're taking away from my platform, it should never be something that puts their or their kids' life in danger.
So I used to feel this huge responsibility on my shoulders, and I used to ensure कि हर एक, like on Facebook groups you might be aware कि some like people post and other people answer. So instead of leaving it to other people to answer, I always made it a point to reply to all questions myself after researching on हम्म. them. And I also सही used सही. to append the research articles कि अच्छा ये चीज़ इसका ये proof है और ये इस तरीके से और ये हमने इसलिए ऐसे करनी है. Even like small things के किस एज में बच्चे को आपने सॉलिड फूड पे लेके आना है, या किस एज में आप उसको हम्म. पानी दे सकते हैं, या आपने उसको हम्म. 1 साल से पहले शहद देना है या नहीं देना, और अगर देना है तो उसके क्या हम्म. नुकसान हैं. सही अगर सही. लाइक आई एम against giving medicines without there being a really severe need for it, right? And especially antibiotics. Even हम्म. doctors, some doctors, not all, uh, prescribe antibiotics even if they're not needed, because you need to you need to perform lab tests or like in-depth clinical or, observation to ensure that the person needs antibiotics. हम्म. तो बस ये छोटी छोटी बातें थी जिन पे I used to research and then share my knowledge. But हम्म. then there came a point हाँ. when I realized that I'm not a doctor. I'm not a हम्म. psychologist. I'm not an expert in the field. Then who am I to guide people? Right? I started questioning myself. And हम्म. that's when अच्छा एक तो ये कि ये जो health aspect है ना, इसके अलावा I was also researching continuously on behaviors of kids and how to deal with them, because by then I had two kids. um, तो किस तरह से उनसे डील करना है, एंड आई नेवर वांटेड टू रिजॉर्ट टू कन्वेंशनल ways of parenting कि आप बच्चे को डांट के या मार के कोई काम हम्म. करवा लेना. So I सही सही. wanted to move away from it. So I was constantly reading and researching कि अच्छा अगर मारना पीटना नहीं है तो फिर क्या करना है, किस तरीके से आपको हम्म. डिसिप्लिन करना है या कॉपरेशन करनी है या कैसे बच्चे रेस करने हैं. यस. So that's what I was going towards. कि तब मैंने सोचा, like in 2020 I decided to give credibility to my voice, and I got myself certified from the Positive Discipline Association, which is based in the US. And for the first हम्म. time, because of COVID, they offered this training and certification online. ऑलराइट. So I सही सही. availed it, and I became Pakistan's first certified positive discipline parent educator in हम्म. 2020. And alhamdulillah, like it's not something that I decided to do on purpose कि मैंने सोचा कि अच्छा मुझे engineering छोड़ के ये काम करना है. No, it all हम्म. happened gradually कि 2016 में the Motherhood Forum शुरू किया. फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 it kept growing. At times I was amazed looking at the journey, at the Motherhood Forum's journey कि किस तरह वो grow हुआ और evolve हुआ. And it all came my way itself. Or alhamdulillah, since 2020 I'm practicing as a full-time parenting consultant and coach. So I had never thought while creating that हम्म. Facebook group on a whim कि कभी ये मेरा प्रोफेशन बन जाएगा, या कभी मैं इसकी वजह से करियर ही स्विच कर लूंगी, या कभी मैं चाइल्ड साइकोलॉजी में कुछ करूंगी. लाइक व्हेन आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग डिग्री, आई नेवर थॉट कि मैं कभी इस फील्ड की तरफ जाऊंगी. कभी सोचा भी नहीं था इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कि मैं साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, बिहेवियर, इस फील्ड में कुछ करूंगी. बट देन लाइक आई सेड, आई felt like I found my true calling when I started doing this work. And alhamdulillah, this work is so much more rewarding. हम्म. दैट्स गुड. आपने बताया कि यू डिड सर्टिफिकेशन फ्रॉम द यूएस, राइट? Yeah, online. या ऑनलाइन. तो दैट वाज लाइक ए, उन्होंने सर्टिफाई किया था आपको कि व्हाट शुड यू डू? Yeah, so it's called teaching parenting the positive discipline way. So ओके. that सो इज. certification enabled me to work with parents to teach them ओके. how to So, deal with this. do you have a an event or something like that के जहाँ पे आप पेरेंट्स को वैसे ही, मतलब जैसे कुछ इवेंट्स होते हैं कि कंसल्टेंसी के लिए पेरेंट्स आते हैं, तो डू यू हैव अ प्लेस लाइक दैट कि जहाँ पर पेरेंट्स आके अपने डिस्कस कर सके मसले और इस तरह से बयान कर सके? Right. So, Bilal, I conduct online and in-person हम्म. workshops for ऑलराइट. parents ऑलराइट. at different venues. It's not a fixed place हम्म. जहाँ मैं करती हूँ, हम्म. as and when it suits the requirements of me and the parents I work with.
Then I do these workshops online. Mhm. And in addition, since I started during COVID, तो उस वक्त तो बहुत ज़रूरी था, उस वक्त तो सिर्फ online की ही option थी, but later I started doing in person as well. I do one-to-one consultation sessions with parents who are struggling with Alright. these issues. Mhm. And in addition, we meet once a month for a mom and child play date at a place in Mhm. Islamabad where children Mhm. get to play independently, and while they're playing and having fun with their age mates, moms get moms get to question or ask me about the parenting issues they're facing. So that's Mhm. a once a month thing where they come and discuss with me. And oftentimes I decide a topic of the month कि आज हम इस बारे में बात करेंगे, and then we can Alright. ask Alright. questions around it. सही सही. So इट्स अ गुड इनिशिएटिव. जैसे आपने कहा कि जाहिर सी बात है, क्योंकि बच्चों की बात ये होती है कि बच्चे वही सीखते हैं जो उनके पेरेंट्स सिखाते हैं एट स्टार्टिंग एज. ठीक है. सो जो हम पेरेंट्स को सिखाएंगे वही आगे बच्चे सीखते हैं. ठीक है. तो एक एक एडवाइस के आप यंगर जनरेशन को, लाइक दे वुड बी वाचिंग दिस वीडियो, तो आप एक चाइल्ड को, एक बच्चों को, जो भी ये चीज़ देख रहे हैं, हम मेरे जैसे स्टूडेंट्स को, आप क्या एडवाइस देंगे कि व्हाट वुड दे शुड बी लाइक इन द फ्यूचर? When they become parents. ऑब्वियसली लाइक. राइट. ओके, सो बिलाल, आपने पूछा कि मैं क्या एडवाइस देना चाहूंगी हम्म. to the lot who are going to be parents in the future. जी जी. So I would like to, instead of saying, I would like to demonstrate it. So Bilal, ऑलराइट. are you up for doing a small activity with me? या श्योर. श्योर. Okay, so Bilal, all through this activity, you have to do as I say, right? ऑलराइट. You have to do as I say. You have to follow my ऑलराइट. commands. So can you put your हम्म. right hand next to your face? ऑलराइट, लाइक दिस. ओके. Yeah, like this. Now, can you make a circle with your thumb and your index finger? या. Wonderful. Now, can you put your hand on your chin? लाइक दिस. Yeah, that's not your chin. I told you to put your hand on your chin. ऑलराइट. ऑलराइट. But Bilal, I told you to do as I say. I did not tell you to do as I do, और right? ठीक. ठीक तो ठीक आपने वो जी. किया जो आपने मुझे करते देखा जो है. देखा, हाँ. आपने वो नहीं किया जो मैंने आपसे करने को कहा, सही. ठीक. right? And you are not a राइट. child. Your brain is not under construction still. You are a grown-up, mature adult, right? But या you were not able to राइट. राइट. follow instructions. So the conclusion is कि हम अपने बच्चों से जो बातें करने को कहेंगे वो नहीं करेंगे, हमारे बच्चे वो करेंगे जो वो हमें करता दिखेंगे, right? ठीक So that was ठीक. the point. राइट. तो आप जो भी चाहते हैं ऑलराइट. कि आपके ऑलराइट. बच्चे जैसे इंसान बने, आपको वो उनको बन के दिखाना पड़ेगा. जस्ट सही सही. वर्ड्स वोंट वर्क. बच्चा सही रो सही. रहा होता है, चीख रहा होता है, तो हम उससे भी ऊंची आवाज में चीख के कहते हैं, रोना बंद कर दो, तुम्हें कब से कह रहा हूँ. क्यों आप हम्म. चिल्ला रहे हैं तो बच्चा कैसे नहीं चिल्लाएगा. बच्चा अपने भाई को या कजन को या दोस्त को मारता है, आप उसको जाके एक लगाते हैं, तुम्हें मैंने बताया मारना कितना गलत बात है, तुम फिर उसको मार रहे हो. था मतलब आप हम्म. बच्चे को जिस काम से रोक रहे हैं आप वही करके उसको दिखा रहे हैं. सो हाउ विल द चाइल्ड नॉट डू इट, राइट? सही So सही सही. modeling or exemplifying or throwing or showing through action is the most powerful parenting tool. ठीक ठीक ठीक. Nice थैंक यू. talking to you, Bilal. थैंक It यू was सो my मच. थैंक यू honor. सो अच्छा मच. लगा आपसे बात या करके, and all the best for your future. थैंक यू सो मच. थैंक यू Take सो care. मच. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज.